is that if our line of approach changes over to Papa November 2, we will again have a 2 miles CPA. So there are two options which are available to us. CPA can occur at November 1 or November 2. So let us evaluate these two options one by one. So what we do first is we pick up the line of approach Papa November 1. We align our parallel ruler to this particular line, take our parallel ruler to point alpha and draw a line parallel to our new relative line of approach, that is Papa November 1. So you can see this line coming up on the plot. Now what I do is I open up my compass equal to WO, Whiskey Oscar, for target delta. Center my compass at point W, Whiskey point, and draw an arc. You can see this red color arc coming up on the plot. The arc is centered at Whiskey and the radius is equal to Whiskey Oscar. Now this arc intersects our new relative line of approach at this particular point. So let us name this particular point as Oscar 1. Now we join W to Oscar 1. You can see the W to Oscar 1 vector coming up. Now this W to Oscar 1 gives us our first option. If the ownership course becomes W Oscar 1, then the triangle which we will have will be W Oscar 1A. The relative line of approach will become O1A, and effective at 1016 hours, that is at point Papa, this relative line of approach will take the target on Papa November 1 track, and when it reaches at November 1, it will have a CPA of minimum 2 nautical mile. Beta, up to here the doubts coming in your mind, up to here अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है. Up to here any doubts? सर मेरा नेट खत्म हो गया था सर, तो अभी वाईफाई लिया है. थोड़ा मेरा ये छूट गया है सर, ये जो सेकंड वाला टारगेट से आपने जो 3 एस्पेक्ट लिया, एक बार फास्ट खाली एक बार बता सकते हैं एकदम फास्ट, तो मैं रिकवर कर लूंगा. Okay beta, what was the last thing you were able to see the plotting of both the targets? Basic plot okay? यस सर, बेसिक प्लॉट सारे कर लिए हैं, और आपने जो सर्कल लिया 2 नॉटिकल माइल का वो भी मेरा हो गया था. उसके बाद मेरा नेट चला गया था सर. एक बार वेरी गुड बेटा, अभी बता रहा हूँ उससे आगे. हमने बेटा पोजीशन प्रिडिक्ट की टारगेट डेल्टा की एट 1016, दैट इज पॉइंट पी. यू कैन सी पॉइंट पी नाउ, एंड पॉइंट पी से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया टू अवर सीपीए सर्कल. ओके सर. There are two possibilities of tangents. One is Papa November 1, another is Papa November 2. हमने पहली पॉसिबिलिटी को पिक किया है अभी Papa November 1 को, एंड हमने अल्फा पॉइंट से टारगेट डेल्टा का जो ए पॉइंट था वहां से ये Papa November 1 को रिवर्स डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया. एंड exactly as we did in the last question, we picked up our compass, open drift equal to WO, center at W, we draw a arc. Red color arc is drawn. It intersects this line at O1, and WO1 is my new course to be followed. Perfect. Okay beta, understood. Very good. So moving ahead from here, up to here everybody is okay. So मैं अब आगे चल रहा हूँ बेटा. Sir, in this case, we are altering course to starboard, right? That's right बेटा, that's right. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ऑल्ट्रेशन टू पोर्ट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. Whatever course you alter to port, you will never be able to reach to the line of approach. Yes. Okay. Thank you. Okay. Okay. Moving ahead now. आगे और क्लियर होता जाएगा बेटा. Now we align our parallel ruler or set square or sliding ruler to W Oscar 1 and measure this course using the plotting sheet as a compass rose. We measure the course, and this comes to a course of 317 degrees true.
317 degrees true. So if own ship alters course to 317 degrees true, initial course is 240, so that's an alteration of 77 degrees to starboard. If our ship alters course to 317 degrees true, effective at 1016, the target will have a CPA of 2 nautical mile at point November 1. Now let us evaluate the effectiveness of this action for target Charlie also. So what I do is at point Whiskey, now I draw my new course. My new course would be 317 degrees true. So you can see this green color vector coming up, and let us name this as O1, this point, the free end of the vector. Now if I join O1 with A, this is going to give me the new relative line of approach for target Charlie. So the length of WO1 is exactly same as WO. There is no change in our speed. So this is indicated by this arc also here. Now we join Oscar 1 to Alpha. This will be our new relative line of approach. Since this is effective at 10:16, so let us first predict the position of target Charlie at 1016 hours after 4 minutes. So interpolating this difference, Oscar, the distance Oscar to Alpha is covered by target Charlie in 12 minutes. Interpolating, we obtain the predicted position of target Charlie at point P here. Now we transfer the new line of approach, that is Oscar 1 Alpha to point P. So you can see a line parallel to Oscar 1 Alpha coming at point P. This will be the new relative line of approach for target Charlie. You can see 3 arrows coming up. 3 arrows can be shown the new line of approach after the action is taken. Now our CPA will be occurring at this particular point, November 1 here. You can drop a perpendicular from Charlie to this new relative line of approach for target C, and this meets here at November 1 point. And it tells us that the CPA for target Charlie will be more than our required value of 2 nautical miles. So this indicates that this action of alteration of course to 317 degrees true will make the CPA of both the targets more than our required CPA of 2 nautical miles. So this is the first option which is available to us. So beta, any doubts which are coming up to here? अभी और भी options हैं हमारे पास which I will explore. Up to here जो doubts आ रहे हैं वो पूछने हैं बेटा. Sir, do we also have to find the new TCPA after making the alteration? No बेटा, not required. Since उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, not required. Okay, sir. Sir, ये जो previous one by one बेटा. सर जो C के लिए जो WO1 लिए हैं वो हमने जो D का WO1 था उसी को ट्रांसफर किया है ना लाइन ऑफ अप्रोच. Exactly बेटा, that's right. It is the same WO1 of delta which has been transferred to Charlie. Yes sir. और उसके बाद जैसे हम लोग प्रोसीड. That's right बेटा. Yes, sir. Great बेटा. So हमने एक option explore किया है. Let's explore further now. We are moving ahead. Now let's see the second option. The second line of approach which we had, the second option was Papa November 2. Papa November 2. So we can now draw this second line of approach, Papa November 2, from point Alpha. So I align my parallel ruler to Papa November 2, take it to point Alpha, and draw a parallel line. So you can see this parallel line coming up here. This is for target delta. So this
can be the second option for our relative line of approach. Now, this new relative line of approach from point alpha intersects our WO vector. WO vector, it intersects at this particular point, and let us name this point as O2. So now you see, if our speed is reduced so that in 12 minutes we do not cover a distance of WO, but instead we cover a distance of WO2. You can see this WO2 vector. If we cover a distance of WO2 by reducing our speed in 12 minutes, our triangle would be WO2 alpha. And in this case, O2 alpha would become our relative line of approach. Transferring this approach to point P, that is 1016 hours, we will have the line of approach like this. The line of approach will take the target ship delta at its CPA at point N2. So again, target delta will have its CPA at point N2, November 2. Now we measure this distance WO2. This distance has to be covered in 12 minutes. We interpolate for this for a period of 1 hour, and that gives us our new speed. And the new speed of our ship comes to 2 knots. So if we reduce the own ship speed to 2 knots, WO2 will be the own ship vector. O2A will be the relative line of approach, effective at 1016, that is at point Papa. This will take the target to Papa November 2 line of approach. CPA would occur at November 2, and it will be 2 nautical miles. So beta, up to here, any doubts coming up? सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया मेरे तो, जो आपने ये सेकंड वाला ट्रायंगल छोटा वाला बना लिया ना सेकंड केस में, वो WAO वाला ये कट करके इसके बाद। बेटा हमने कोई एंगल नहीं बनाया, मैं दोबारा से आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप वाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। सर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मेरे आप ये लाइन आपने जो सेकंड लाइन ऑफ अप्रोच ली थी ना नई वाली, उस लाइन ऑफ अप्रोच को कैंसिल करके WO2 और A ये वाला ट्रायंगल बन गया अपना नया वाला, जिसमें स्पीड रिडक्शन हुआ। इसके बाद जो आपने इसको शिफ्ट किया है पीछे, वो नहीं समझ में आया मेरे। इसको कहाँ शिफ्ट किया है बेटा हमने? WO2A को हमने कहाँ शिफ्ट किया है? ये ऊपर आपने डॉटेड लाइन जो दी है सर आगे। ओ बेटा वो समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, वो समझानी है। अच्छा ठीक है, होल्ड ऑन। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। लेट मी नाउ एक्सप्लेन टू यू कि ये डॉटेड लाइंस क्या हैं। जो एक्शन हमने डेल्टा के लिए ढूंढा है अभी, उसको चार्ली पे टेस्ट भी तो करना है बेटा, सो लेट्स डू दैट। So this is the second option which is available to us. Let us now check the effectiveness of the second option, that is reduction in speed for target Charlie. So let's do that. Our initial own ship vector was Whiskey to Oscar, WO. Now we modify the length of this vector as per our new speed of 2 knots. And this is modified now to WO2 here. You can follow the laser pointer, W2O2. This is the new own ship vector. Now from O2, I join a line with point alpha. You can see Oscar 2 to alpha dotted line coming up. This will be the new relative line of approach for target Charlie. This is effective at 1016 hours. So transferring this line O2 alpha at point P, which is the predicted position at 1016, we have our new line of approach. So you can see this dotted line from point Papa of target Charlie showing up on the screen, and we can clearly see that the CPA of target Charlie
has increased from its initial value. So it is much more than 2 nautical mile, which is the required CPA. So we have now seen that this is the second option which is available to us. Reduction of speed. If we reduce the speed to 2 knots, both the ships will have a minimum CPA of 2 nautical miles. So शिवांग बेटा आप समझ गए? हाँ सर समझ गया, मतलब जो सेकंड वाले की स्पीड थी उसको कट करके फर्स्ट इनिशियल जो चार्ली वाले पे कट करके नीचे नया बना के उसको नीचे खींच दिया और उससे डिस्टेंस आ गया. राइट बेटा, राइट. सो एनी डाउट्स कमिंग अप टू हियर बेटा? अभी मैं आगे और भी आपको बताऊंगा विच इज द रिकमेंडेड एक्शन, बट अप टू हियर कोई डाउट आ रहा है? Sir, Sir, a little the back. distance for WO2 for target Charlie is the same as the distance from WO2 for target Delta? सर्टेनली बेटा, एग्जैक्टली सेम. हमने WO2 डेल्टा से ही पिक किया है एंड वी आर टेस्टिंग इट फॉर चार्ली. Okay, okay. Just small doubt from little back, sir. How we obtain while iteration of the course? Sir, how we obtain this O1 A in Charlie target, sir? O1A इन चार्ली टारगेट, ये कैसे आया? दिस इज द डाउट. Yes, sir. ओके बेटा. Yes, sir. बेटा हमने सबसे पहले डेल्टा पे WO1 वेक्टर निकाला. WO1 वेक्टर फॉर डेल्टा, ये हमने डेल्टा के लिए निकाला. इसी WO1 को हमने चार्ली पे ट्रांसफर किया था बेटा. WO1 ऑफ डेल्टा इज एग्जैक्टली सेम एज WO1 ऑफ चार्ली. Okay, sir. और उसी को लेके हमने सर वो रेडियस ड्रॉ कर दिया. दैट्स राइट बेटा, क्योंकि हमें एक टारगेट से जो भी कोई कोर्स या स्पीड मिलती है, हमें दूसरे टारगेट पे भी उसे टेस्ट करना है. सर चार्ली के लिए O2A एक बार फिर बता देंगे सर, O2A कैसे है? ओके बेटा, योर डाउट इज कि चार्ली के लिए हमें O2 कैसे मिला. बेटा हमने पहले डेल्टा पे O2 तो समझ में आ गया. हाँ, O2 समझ में आ गया. जो WO1 है उतना ही हम वहाँ पे WO2 ले लेंगे. राइट. तो क्या डाउट है बेटा? सर जो O2A जो डॉटेड लाइन दी है ना, वो किसको ट्रांसफर किया था हमने? ओके बेटा, हमने सबसे पहले तो O2 पॉइंट को फाइंड आउट किया. And once you find the O2 point, we know that O2 to A has to be the line of approach. Yes, sir. So that's how we got the dotted line. Beta. Oh, okay, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये आपने जैसे स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखवाया था कि TCPA जिनका कम है दैट विल बी ग्रेटर रिस्क. तो अगर हमें पता है कि टारगेट डी अगर ग्रेटर रिस्क पे है तो हम उससे अगर 2 माइल पे क्लियर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे टारगेट से हो जाएंगे ना क्लियर? बेटा इट वुड हैपन इन 90% ऑफ द केसेस, बट देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो दूसरे टारगेट के साथ ना मीट कर रहा हो हमारा क्राइटेरिया. दैट इज व्हाई वी चेक इट ऑलवेज विद द अदर टारगेट. तो इन एग्जामिनेशन अगर 3 टारगेट है तो हमें तीनों के साथ चेक करना होगा सर? दैट्स राइट बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें तीनों के साथ चेक करना पड़ेगा. यूजुअली पेपर सेटर्स बेटा ये ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन इतना लंबा ना हो दैट यू नीड टू टेक मोर देन 20 मिनट्स. इसके लिए अलॉटेड टाइम हमारे पास 20 मिनट्स है. सो पेपर सेटर इस चीज का ध्यान रखता है कि क्वेश्चन उससे ज्यादा लेंथी ना बने. ओके सर. सर एमएमडी में एक बार 3 टारगेट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है. हाँ बेटा, पर उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी. दैट वुड बी सिंपलर. ओके, और अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी